तो दोस्तों आज हम लोग खेलने वाले हैं द सिंकिंग सिटी। तो सिंकिंग सिटी जो है वो शायद ज़ॉम्बीज़ वाला गेम है, जहाँ पे मैंने देखा था डाउनलोड जहाँ से करा है। तो वहाँ पे जो तस्वीरें जो भूत वाली बनी थी, तो मुझे पता नहीं है कि असल में किस टाइप का गेम है। तो इधर बैकग्राउंड तो हमें पानी में दिख रहा है, पानी स्विमिंग वाला गेम ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ वाला गेम है शायद। तो हम इसको लगा के देख लेते हैं, न्यू गेम कर लेते हैं। मैंने डालने से पहले इसको सोचा नहीं कि किस तरह का गेम होगा, बस मैंने डाल दिया। मैंने कहा गेमिंग चैनल पे होना चाहिए वाला गेम भी। तो ये हमारे सामने पीछे भी पानी वाली वेब वो दिख रही है हमारे पास चीज़ें। पीछे कश्ती बनी हुई है, नीचे मछली तो लग रही थी, लेकिन ये कुछ और ही है, अजीब सी मखलूक। और भी लोडिंग हो रही है, लोडिंग हमारी थोड़ा टाइम लगा रही है। पता नहीं किस टाइप का गेम है। जब तक मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये अनरियल इंजन वालों का गेम है, यानी कि एपिक गेम्स वालों का गेम है। तो पहले मैं समझा बैटल रॉयल तो नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, बैटल रॉयल ऐसे नहीं होते। बैटल रॉयल तो जैसे फोर्टनाइट वगैरह टाइप का ही होगा, अजीब सा गेम, कार्टून टाइप वाली। लेकिन ये थोड़ी इसकी थोड़ी बहुत अच्छी ग्राफिक्स लगी। 90% की लूजिंग चली गई हमारी। लग गया हमारा गेम। और शुरू में ये अजीब से कुछ यार ओ देख लिया, बोला था मैंने भूत वाली गेम, भूत वाला गेम है ये। कैसी आवाज़ आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। ओह कितना बड़ा ऑक्टोपस है भाई। तो ये अरे हम लोग आ रहा, हमारा जो आसमान है वो क्या चीज़ है भाई। नीचे, अबे भाई क्या चीज़ है। हमारा आसमान जो है वो है पानी, और ज़मीन ख्वाब देख रहा था यार। छोड़ो, बोलने का फ़ायदा नहीं। कश्ती में शायद हम लोग हैं। नीचे बिल्डिंग्स बनी है, ऊपर पानी है, क्या हुआ हुआ इसमें। गेम भी स्टार्ट हो गई, चलो। पहले हमें पिस्टल मिल गई है, क्या करना है। अच्छा यहाँ आगे बनी I हुई थी। never have to use it, but something tells me I will. ये कुछ है, इसमें कुछ है, चलिए तो बाद में पढ़ेंगे, और पढ़ने की ज़रूरत तो होती नहीं है। Never trust a tourist advertisement. शुरू में इतनी चीज़ें, ये बना हुआ है, कुछ भी नहीं फालतू है। ये है कुछ, क्या हो गया, होल्ड करना है शायद। हाँ होल्ड करना है, अभी भी नहीं निकाला। अब कॉयल स्प्रिंग्स गन पाउडर वगैरह निकाला है, तो ये क्या है, इस बंदे से मालूमात करनी क्या। Now get out. इज्जत कर दी भाई। At आ गए last, भाई। Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Ah, much obliged, Mr. Vandenberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. ओ ये वाला ऐसा वाला है गेम है। तुम क्या पूछे हैं, अबाउट माई प्रॉब्लम्स पूछ लेते Such पहले इसके। vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton,
is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. ओ भाई नया सूट मिल रहा है, लेकिन नया सूट हम पूछेंगे नहीं, वो इतना How can ज़्यादा I इसका find अच्छा नहीं लग Mr. रहा, Throckmorton? इससे ज़्यादा तो हमारे अच्छा Worry है. you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. ओहो व्हाट्स रॉबर्ट Can you tell me a little about Mr. Throgmorton? A इतना remarkable मुश्किल नाम है, creature, थ्रॉगमॉर्टन. scion of a robust bloodline, a philanthropist, a scholar, and the patron of the famous Oakmont University. A man of great ambitions and even greater ego. वे बोली दे नाइस सूट. That's an eye-catching suit. Thank you, Mr. Reed. A mere flood is no excuse for one to abandon one's style. I take it you're a big fan of yellow. Well, I have a particular weakness for it. Call it. आई नीड समवेयर टू स्टे. Don't judge a book भाग by चला its गया जल्दी cover, से. Mr. Reed. ओहो हाउ डू आई गेट डेविल्स रीफ. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. गुड बाय कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. We'll meet again, Mr. Reed. एम प्रेस टू ईट. अच्छा सही है, एक्टिवेट कर लेना अपना मैप. ये क्या है, ओक माउंट का मैप है सारा, शायद बहुत बड़ा मैप है भाई. अलग अलग चीज़ें भी मिल रही हैं इधर हमें. ओक माउंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये क्या है, सिटी हॉल है, और ये पुलिस वालों को लग रहा है मुझे, पुलिस डिपार्टमेंट ही है. और चीज़ें बहुत सारी हैं इसमें, तो हम लोग निकल लेते हैं अभी यहाँ से. क्या है, केस बुक में चेक बुक, साइड केसेस. अभी छोड़ो भाई, निकलो अभी. ये बंदा क्या कर रहा है. अंडर द कील बार एग्जिट. उधर कुछ भी आ रहा है, यही बता रहा है. अरे भाई ये यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट जाके सिनेमैटिक चली गई. I don't care about your petty तो बंदर है. excuses. No one leaves the port until my son is found, and that is fine. Excuse चलो me. जी, ये रॉबर्ट था. और Robert Throgmorton? क्या कितना मुश्किल नाम है यार, बोला भी नहीं आ I'm रहा. not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator. अच्छा हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं. Perhaps we can help each इसको other. देख के डर लग रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा बंदर में मिल रहा है, बदमाश You're the टाइप. man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. If I may ask, what happened to your son? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers. Mark my words. Who are the सही पूछ लेते हैं Those इससे. fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells, they are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. Mr. Throgmorton,
Let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you... Vera. You have a point, newcomer. Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. अच्छा वेरा का मतलब फाइन है, तो इससे एक हमें चीज़ पता चल गई कि अगर फाइन कोई पूछा और ही तो वेरा बोल दे तो फाइन का ही होता है मतलब. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the बस shore. कितनी लंबी बातें हैं भाई. Fishermen supposedly brought him to the house. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. ओहो. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. Was standing right in front of it. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. दादा कील वाला एग्जिट. तो अब क्या करना है? फिशरमैन हाउस. यही शायद है क्योंकि यही बोल रहा था. सामने ही खड़े हो. तो एफ. वो लाइट लगी है भाई. कहाँ लगी है पता ही नहीं चल रहा. यहाँ पे कुछ मिल जाएगा. मैं ये कुछ The है. book is damp and damaged, but clearly well cared for. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. कश्ती गिरी पड़ी हुई इधर. क्यू से कुछ आ रहा था. ये क्यू से क्या है ये? It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Let's see what you find, newcomer. ये कुछ है इधर. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. ये बंदा कुछ कर रहा है. अजीब सी पागलपन है. लो सही हो गया बात करने के लिए. Oh, man. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, private eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? पहले से पूछ रहे है कौन. Name's Will. Will अच्छा ये Hammond. फिशरमैन. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. And he started to make these horrible sounds and... Okay, my head began to burst. And he woke up. And after that, I don't remember a thing. Just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me... That sounds familiar. Outsiders, show some respect. Okay, He is कौन our है? Lord, our life, लो इसका our love. खुदा मानते हैं लोग. Didn't know. That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea where Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. I'm afraid of what I might dream. My head! I still hear those voices. Choo choo. जो है मेरा कुछ बोलेगा. ये कुछ पड़ा हुआ है. शीशा है भाई. शीशे में भी कुछ शक्ल वगल नहीं दिख रही. ये वही लूटा मारी की जगह है. Choo choo. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. ये पड़ा हुआ है.
कश्ती कहाँ से गिर गई ये? इसको देख लेते पहले। I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. वही क्या आ रहा है साइड में? लिक्कर टाइप का कुछ था ये। 5 cards short of a full house. I'm surprised they don't have someone's portrait here. ये क्या है? छुरा। ये कुछ आया था आग। Never seen knives like जहाँ this आग बनी होगी before. वहीं से देखेगा, वरना नहीं देखेगा। पागल इंसान, इतनी बड़ी छुरी थी, फुल दिख रहा है। में क्या है? Seems like prohibition hasn't affected उसकी Oakmont लाइट too देखो, much. अच्छा ही लगी है। ये क्या आग बनी आ रही है? So that's what an Innsmouther looks like. क्यों से वही? ये कुछ आ रहा है तो या बीच में लेके आया है। अच्छा, होल्ड का ऑप्शन आ रहा है। ओहो, क्या बोला समझ में नहीं आया भाई, दोबारा बोलियो। नहीं समझ में आया, छोड़ दे छोड़ दे। ओहो, ये क्या है? ये क्या आ रहा है? Take this, ape face. What's happening? Yeah, run! Okay, let's see what we have here. Take this, ape face. What's happening? Yeah, run! को हमें नंबर्स देने, नंबर्स आगे लिखे हुए। एक मिनट, सारे नंबर रिमूव करने पड़ेंगे पहले। Take this, ape face. अब नंबर्स देने हमें। सीन्स का लिखा हुआ है ना, नंबर 1, What's happening? नंबर 2, Take this, Number ape 3. face. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the हो गया fishermen मेरे and ख्याल his से। hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. हो गया कि एविडेंस कलेक्टेड, एविडेंस लिखा हुआ है, एविडेंस पढ़ दिया। अब क्या करना है? There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Let's see what you find, newcomer. I gave you clear instructions. I've did said I everything not? I know. Don't do anything stupid, newcomer. And keep your hands where I can see them. ओहो, ये क्या है? अच्छा, तस्वीर तो नहीं खींचनी।
गोली नहीं चल रही है हमारे किसी के ऊपर। तो माइंड प्लेस के ऊपर क्या आ रहा है, टी करके इन्फॉर्मेशन हमें आ रही थी। माइंड प्लेस, ओहो, सी करके केस बुक यहीं से पहुंच जाते हैं। ओहो, अब इनको क्या करना है, लॉक हो गए तो। अच्छा, कंबाइन करना है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हो गया इससे। अच्छा, कंबाइन करना है मैं इन लोगों से। रुक जा भाई, अरे तुक्के मुँह गए। Was dangerous and posed a threat always Flynn and his fellow fishermen. ये लग ही रहा मुझे डेंजर, spread some sort of which made everyone nearby suffer hysteria. मुझे लग ही रहा है I can track down Albert. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over ओहो, ये like कौन भाग this. रहा है? ये क्या हमें क्लूज मिल रही है शायद हमें। ये क्या? So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. हाँ, खत्म हो गए क्लूज। Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. ऊपर चढ़ना। Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. यहाँ से भाग रहा है अब। इधर है। ओहो, ये तो हाथों की दुनिया है। ये पड़ा हुआ कुछ। तो जेब फटी हुई है। Something in the pocket. The blood is fresh. ओहो, ये क्या चीज़ है? Take a look. भूत वाली चीज़ आने शुरू हो गए अभी से। यहाँ जाना है।
door won't budge. पैडलॉक की इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगी. Padlocks and weak planks can be broken with a short or melee attack. सही है. E से हमारा melee attack होता है तो Door won't budge. वही ये चीज़ है. ओह ये तो मकड़ी टाइप की कुछ है. अब गेम स्टार्ट हो रहा है हमारा खतरनाक सा. ये क्या पड़ा हुआ है? मछली पड़ी हुई शायद. One fatal round through the forehead. That's no ये accident. तो उसी का बेटा लग रहा है, बंदा This टाइप was का. deliberate. One fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate. अच्छा अब इसको हमें दोबारा से करने का माइन. Right. ऊपर जाके देख लेता हूँ ऊपर क्या चीज़ मिलेगी हमें. दरवाज़ा लॉक. Yeah. चलो अब इसके पास बताना पड़ेगा. Son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. My condolences, Mr. Thornton. हम क्या कर सकते हैं? हमने थोड़ी मारा हुआ है तेरे बेटे को. Your outcome. जो Your चाहिए वो बता रहे. तूने condolences हायर will करा not हमें. bring him back. पैसा नहीं देगा चमाट मारेंगे तेरी So मुंह much पे. of our blood तो इतनी तो spilled रगड़ for देंगे तेरी. nothing. So much effort in vain. My poor Albert. Tell me you know who did it. I want to look him in the eyes, make him beg for mercy. Can't be sure yet. Seems like he was a fisherman by the name of Lewis. He had a gun and pursued Albert after he fled the house. Lewis it is, then. What do you know of him? Turns out you were right. He's an Innsmouther. Ugh. Those filthy scum have done it now. When I'm through with them, they will rue the day they dared lay a finger on a Throgmorton. Bring me that dirtbag, Lewis. He and I are due a reckoning. Do this for me, and I'll help you with anything you need. तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना पार्ट भी एंड करते हैं. अब इसके बेटे के साथ आगे क्या हुआ है वो हम अगले पार्ट में पता चलाएंगे. तो हमारा पार्ट 1 तो शायद यहीं तक है. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. अल्लाह हाफिज़.